In this video we are going to explain how to this is yet another type of stainless steel hinge which we have newly introduced in our portfolio of the hardwares. If at all the profiles are like this, and this is the outer profile of door and this is shutter profile of door where there is no hinges, this is the method number one how these hinges could be fixed in this. And in the next video we have explained how to fix it from frontal like this could be fixed frontal like this, or it could be concealed this type. In this we have shown how to fix this will be fixed in the outer frame, and this will be fixed in the sash frame, and this will open like this. It could be opened up to almost 180 degrees. In this way it will rotate. When there is no groove, this could be used, and CSK type of screws are required to be fixed in this, and we suggest to use nut inserts here. In a separate video we have explained how the nut inserts are fixed into the profile and what is its benefit. And fixing screws, suitable fixing screws, screw type M5 are required to be used in this. This is the demo which we have done. Suppose these are aluminum profiles. We didn't have any aluminum profiles, that's why we fixed this in wooden boards. You can see, suppose this is your outer frame and this is sash frame. This is going to fix like this, and this will open like this more than 180 degrees, and this will close like this. This could be, if the tube is bigger, you can fix this in front also. Almost in most of the cases people like to use it in this way, and this will collapse and close like this, and from the front you are able to see only this. Hope you understood. If you have any questions, let me know on the number which is provided on the heading of this video. Thank you. हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे एक हिंज। ये हिंज है जहाँ पे सेक्शन के मात्र ट्यूब होते हैं और उसके अंदर कोई ग्रू नहीं होता। जहाँ पे ग्रू इंसर्ट नहीं, इसको फ्लैट फ्रंटल इंसर्ट कहते हैं कि सामने से हिंज लगता है। तो उस केस में जो है ना, इस किस्म के हिंज का, स्टेनलेस स्टील हिंज जो टेस्टेड होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। मान लो कि एक डोर का प्रोफाइल आउटसाइड है, ये डोर का शटर है, तो उस केस के अंदर ये हिंज इस तरह से लगेगा यहाँ पे जैसे दिखाया गया है। ये टॉप व्यू है उसका हिंज का, तो ये इस सेक्शन में लगेगा और यहाँ पे उसको 4 स्क्रू लगेंगे। ये सैश में लगेगा और उसमें 4 स्क्रू होंगे। कुछ जगह पे इसको उल्टा भी लगाया जाता है इस तरह से। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ आपका सेक्शन जैसा है। समझ लो कि यहाँ पे अगर उसका डिस्टेंस कम है तो ये इस तरह से भी लग सकता है या ये इस तरह से भी लग सकता है, डिपेंड होता है। लेकिन हम इसके साथ रिकमेंड करते हैं कि ये जो आपके जो स्क्रू लगाओगे, स्टेनलेस स्टील के स्क्रू लगे और उसके साथ ये नट इंसर्ट लगाकर इसको आप अप्लाई करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नट इंसर्ट और इसके जो कुछ भी डिटेल्स हैं ये मैंने सेपरेट वीडियो के अंदर एक एक्सप्लेन किए हैं। अगर कुछ डाउट होगा नट इंसर्ट के बारे में या इस हिंज के बारे में, तो इसके साथ जो नंबर दिया गया है उसके पर आप मुझे संपर्क करें, तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, और कुछ ऑर्डर्स होंगे तो इसके साथ बताएं। थैंक यू।